Welcome to all panelists and welcome to our audience. Hello, everyone. International Institute of Goat Management welcomes you to share experiences and deliberate on livestock financial services, lease loan insurance for livelihood restoration in post-COVID era. Webinar focus will be on existing financial inclusion status for livestock rearers in India, benefits and gaps with current financial service providers, and way ahead pertaining to livestock finance. We are fortunate to have a diverse panel for a stimulating discussion. Among them is Dr. Arun Ramesh Joshi, CEO, Janki Devi Bajaj Gram Vikas Sanstha. Sir has had extensive experience across academics and practice pertaining to sustainable rural development. He has been instrumental in founding and nurturing National Livelihoods Resource Institute and School of Rural Management, which has been recognized by AICTE. Also among us is Dr. R.S. Reddy, Managing Hi, Director. sir. Hello, sir. Hi, and good evening to all other panelists. This is Dr. Reddy from Andhra Pradesh State Cooperative Bank, Vijayawada. Great, sir. Great to know. I believe the voice and video is all clear to you, sir. Yeah. I'm able to hear you. Yes, sir. Great, sir. We are into the introduction and we are glad to have you, sir. Yeah, please carry on. Yeah. Okay, sir. So also among us right now has joined Dr. R.S. Reddy, sir, Managing Director, Andhra Pradesh State Cooperative Bank. Sir has had substantial experience for last mile financial services delivery and respective policy formulation. Among other notable contributions, he has pioneered Kamdhenu and integrated dairy farming projects under NABARD for grassroots impact and sustainable veterinary infrastructure. Also joining us is Dr. Bala Swami, General Manager, New India Insurance Company. Sir is a seasoned. He has been one of the leading authorities for bringing topic of insurance for small ruminants on prime debates and prompting action towards it. Also with us is Mr. Ritesh Sinha, Head Projects, CSR, HDFC Bank. Sir is a seasoned corporate social responsibility professional with focus on development of self-sustainable models across healthcare, livelihoods, and sanitation, among others. He has been instrumental in setting up goat promotion and resource center in Ludhiana for stimulating commercial goat farming. Also among us is Mr. Jatin Singh, founder CEO, SkyMet and Gram Cover. Sir has pioneered private sector initiatives for weather forecasting in India, better known as SkyMet, and for providing accurate weather forecast to Indian farmers. He is also spearheading insurance inclusions for farmers through Gram Cover with a vision for a holistic insurance and last mile delivery for the underserved community. Also with us is Mr. Sanjeev Kumar, founder advisor, the Goat Trust Lucknow. Sir is an Ashoka Fellow and has substantial experience with development sector across grassroots implementation, academics, and policy advocacy. For the past decade, he has been promoting small livestock-based livelihoods as a means towards the idea of development. Among audience, we are fortunate to have participants from civil society organization, CSR, NGOs. We are also fortunate to have individuals with extensive experience on livestock financial services and respective policy advocacy. I would now brief on the planned proceedings. We will start with a brief presentation. Presentation will be followed by community experience sharing. Post this, panelists will share their views, and post an inter-panelist discussion, we will open the house for the audience. So I would now request Mr. Vaibhav Trimukhe to start with the presentation. Thank you, sir. Hello, welcome everyone.
Welcome. Hello, sir. So firstly, I will be talking about the profile of livestock in India. India has the largest population, which is around 535.78 million, and goat and sheep in second rank. Also, there is 70% of livestock is owned by landless and marginal farmers. According to NSSO, or NSSO, the herd size of goat and sheep is 0.63, which is less than 2.4 goats in family. Average land holding of self-employed livestock farming is highest in Rajasthan and lowest in Bengal. Also, सूखा प्रवण क्षेत्र में जो देखा जाता है कि मार्जिनल फार्मर्स जो है उनके पास सबसे ज्यादा लाइवस्टॉक की संख्या है। साथ ही जो लाइवस्टॉक बिजनेस सेंटर में महिला एक मेजर रोल प्ले करती है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि लाइवस्टॉक बिजनेस के लिए इंडिया में किस प्रकार के कौन से अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओनली 4% ऑफ इंस्टीट्यूशनल लोन इज अवेलेबल फॉर लाइवस्टॉक बिजनेस। पूरे इंडिया में अगर हम जब बात कर रहे हैं कि 534.78% वहाँ पे हमारे पास लाइवस्टॉक है, पर ओनली 6% आर कवर अंडर द इंश्योरेंस। उसमें भी लार्जली बिग एनिमल्स का ही इंश्योरेंस होता है। साथ ही इंडिया में 11% ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर 35% एंड कॉन्सेंट्रेट फीड इज 25% डेफिसिट। जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एसएजीज और माइक्रो फाइनेंस, इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया हुआ है, पर साथ ही में यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पे लो क्रेडिबिलिटी होती है कि जो गरीब किसान जो होते हैं कि मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है, जो कि माइक्रो फाइनेंस और एसएजी का एक मेजर क्राइटेरिया होता है, जिस कारण उनको लोन एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही यहाँ पे लोन के साथ ही इनको अदर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाती, जैसे देखा जाए तो इंश्योरेंस या अदर फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती। साथ ही यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट जो होता है सबसे ज्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और लोनिंग का प्रोसेस डिफिकल्ट है। फिर हम अगर बात करते हैं कि बकरी बटाई सिस्टम एज अ ट्रेडिशनल टूल, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये देश के हर राज्य के हर गांव में किसी ना किसी प्रकार से मौजूद है। जैसे कि गांव में बेटर ऑफ जो फैमिलीज है वो गांव के गरीब किसान को, गरीब या बैकवर्ड फैमिलीज को बकरियां देते हैं। उसमें कुछ लूप होल्स है, उसके भी हम आगे चल के आगे वाली स्लाइड में बात करेंगे। तो हम जैसे देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ लाइवस्टॉक लीजिंग जो है, इसके कुछ स्ट्रेंथ्स है एज वेल एज इसमें कुछ वीकनेस है। तो हम इसके स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इसमें पहला है कि एग्जिस्टिंग इनफॉर्मल एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो इसमें हमें देखने मिलता है कि जो किसान है, किसान को पता होता है कि किसी ना किसी तौर पे जो हमें बकरी मिलने वाली है, इसमें क्या क्या नियम कानून है, वो एक प्रकार से जानता है कि मुझे बकरी मिलेगी, उसका मुझे किस तरह से रिटर्न करना है। और साथ में ही उसे गांव में ही बकरी मिल जाती है। अगर वो लीज पर लेना चाहता है तो गांव में ही उसे बकरी लीज पर मिलती है। और जो अगर बकरी में कोई प्रोडक्शन के लिए अगर देखा जाता है कि उसमें लॉस होता है, तो ये लॉस दोनों पार्टीज इक्वली बेयर करती है। साथ में अगर बकरी में किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसका जो लॉस होता है वो लीजर के ऊपर होता है। इस वजह से यहाँ पे लीज इजीली मैनेज हो जाती है। साथ में किसान को बकरी इसमें उसको मंथली रिपेमेंट नहीं करना होता है, तो वो एक प्रेशर फैमिली पे नहीं होता है, फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता। अगर हम इसके वीकनेसेस की बात करें तो इसमें होता है कि किसान को जो है बकरी तो मिल जाती है, पर बकरी देने के बाद जो उसे सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे कि उसको डीवर्मिंग, वैक्सीनेशन, ये कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। साथ में पुअर क्वालिटी ये एक जो होता है कि जानबूझकर भी किसान होता है कि जो लीज पर देने वाले बकरी होती है वो जानबूझकर अपनी कमजोर या मरियल मेमना किसान को दिया जाता है, जो कि अगर वो फिर बकरी को देता है तो वो अल्टीमेटली प्रोडक्शन के ऊपर ही अफेक्ट होता है। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और इस सिस्टम की एक जो मेजर वीकनेस है, यह एक रिजिड सिस्टम है। इसमें कोई भी इनोवेशन का स्कोप नहीं है। और इसमें हमें एक पावर डायनेमिक देखने मिलता है जो कि हैव्स एंड हैव नॉट्स होता है, जो कि अगर डिसीजन लेने वाले होते हैं, डिसीजन मेकर्स भी जो होते हैं, जो फैमिली से वो डिसीजन लेते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी नहीं देखा जाता। फिर साथ में हम जब आगे बात करते हैं कि इन सारी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए, इसको स्टडी करते हुए गोट ट्रस्ट ने पिछले 6 सालों से इस पर काम किया। उसके
अनुसार पे, उसके एक्सपीरियंस के आधार पे हमने एडवांटेजेस जो इसके हमारे एडवांटेजेस है, बकरी बैंक के एडवांटेजेस के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो बकरी अगर हम लीज पे दे रहे हैं तो इसमें कुछ किसान को भी फायदे है, साथ ही साथ में जो प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी क्या क्या फायदे है उसके हम बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले देखा जाता है कि जो हम लीज कर रहे हैं गोट या फिर जो प्रोडक्ट लीज कर रहे हैं वो इजीली एक्सेसिबल है, इसमें लीज पेपर वर्क होता है। साथ में जो किसान को सब ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग जो कि उन्नत बकरी पालन या फिर पशुपालन किस तरह से किया जाए। साथ में जो हम बकरी उनको लीज पर दी जा रही है उसका इंश्योरेंस किया जाता है। और जो बकरियां जो मिलती है वो क्वालिटी बकरियां होती है, जिसके कारण प्रोडक्शन में हमें ज्यादा फायदा मिलता है। और इसका जो रेगुलर हेल्थ चेकअप जो होता है किया जाता है। साथ ही साथ में अगर हम देखें कि जो प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या फायदे हैं, तो उसके तो फर्स्ट में देखा जाए तो उनको सबसे पहले जो उनके असेट पे ओनरशिप होती है और उनका रिपेमेंट जो होता है अश्योर्ड होता है। फिर स्पेसिफिक टारगेट के साथ काम करना है, हमें यहाँ पे पुअर और अल्ट्रा पुअर फैमिलीज के साथ काम करते हैं। साथ ही अगर देखें तो हमारे जो रिटर्न जो है वो एश्योर्ड होते हैं, क्योंकि इसमें डिफाइन किए हुए किस तरह से रिटर्न आया जाएगा, फार्मर्स को भी पता होता है और प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी पता होता है कि अगर एक बकरी अगर 4 बच्चे दे रही है तो उसमें से जो 2 बच्चे होंगे, 2 किसान के 2 बच्चे होंगे और 2 प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। इसी तरह से उनको जो रिटर्न मिल रहा है वो एज ए रिवॉर्ड के तरफ मिल रहा है। फिर साथ ही साथ में हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पर प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सर्विस पे ज्यादा फोकस होता है, ना कि कैश मैनेजमेंट पर फोकस होता है। और यहाँ पे हमें मिनिमम एचआर की जरूरत पड़ती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अगर 100 बकरियां अगर लीज पे दे दी है तो उसी के प्रॉफिट से हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और फिर अभी हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स के जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके बारे में हम जब बात करेंगे कि ये इसमें कुछ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल हमें सर्विसेज मिल रही हैं। जो फाइनेंशियल सर्विसेज में हम बात करें कि हमें जो होता है कि एक तो किसान को एक तो क्वालिटी गोट जा रहा है, फिर साथ ही साथ में उसको लाइफ स्टॉक क्रेडिट मिल रहा है। लाइफ स्टॉक क्रेडिट एक होता है कि जिसे हम कहेंगे कि उसे वर्किंग कैपिटल मिल रहा है, कि हर किसान को एक बकरी के ऊपर 500 रुपया उसे क्रेडिट मिल रहा है, जिससे वो फीडिंग और अदर मैनेजमेंट कर सकता है। फिर साथ साथ किसान को 5 प्रेग्नेंट गोट दिए जाते हैं जो कि उसके परफॉर्मेंस के बेस पर होता है। साथ ही में हम देखते हैं कि उसको अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है और उसे टेक्निकल गाइडेंस भी दिया जाता है। और अगर हम नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो हमारा जो कैडर होता है, रूरल कैडर है जो है उसके वो हमें हमारे किसानों को डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिसमें उनको बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज मिल रही है। फिर प्राइस एस्टिमेशन कर दिए कि किसानों को अपनी बकरी का हर 3 महीने बाद उनको बताया जाता है, उनको रेट डिक्लेरेशन किया जाता है कि आज मेरी बकरी इस इतने वजन की है और इसकी मूल्य इतना है। फिर साथ में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एआई कराया जाता है उनकी बकरियों में, जो कि हम एक कर सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। फिर साथ ही में उनको फैसिलिटेट किया जाता है कि उनका जो सरप्लस प्रॉफिट आ रहा है उसके लिए इनको फैसिलिटेशन किया जाता है। और जैसे कि मैंने अभी हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो कि हमारे 6 प्रकार के हैं, जो कि आपको यहाँ पे भी देखने मिल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि बेसिक स्टेप्स जो होते हैं हमारी बकरी बैंक, अगर हमें किसी विलेज किसी क्लस्टर में या फिर प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशन को कहीं पे बकरी बैंक एस्टेब्लिश करनी है तो हमें क्या क्या स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। तो पहले तो होता है कि हमें एक ऐसे क्लस्टर का आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि जहाँ से 10 से 15 विलेजेस है, वहाँ पे एग्जिस्टिंग गोट फार्मर्स है, गोट रेयरिंग हो रही है। फिर हम यहाँ पे एक फिजिबिलिटी एनालिसिस असेसमेंट करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग गोट फार्मर्स कितने हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है गोट पालने की, और यहाँ पे कौन सी ब्रीड की बकरियां का पालन हो रहा है। फिर साथ में हम वहाँ पर करते हैं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में अलग अलग टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे वीडियो शो, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी मीटिंग्स और मोबाइल यूनिट जो होते हैं वो उसके थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं। फिर साथ में वहाँ पे पशु सखी और पोटेंशियल क्लाइंट्स का आइडेंटिफिकेशन करके उनका ट्रेनिंग किया जाता है। फिर उनके साथ एक उनका 5 लोगों का जो है जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप का फॉर्मेशन किया जाता है। उन किसानों का ट्रेनिंग किया जाता है, उनको जो होता है फैसिलिटेट किया जाता है कि आगे चल के उनको फैसिलिटेशन भी किया जाता है। तो हम यहाँ पर एक देख सकते हैं कि हमारा जो कम्युनिटी
जो एक्सपीरियंसेस है। वीडियो विजिबल सर? Yes, it is visible. हेलो, Visible. थैंक यू। सुनीता नारायणराव, माझ्या गावाचे नाव हर्षी खरे. माझ्याकडे स्वतःच्या आता 4 शेळ्या आहेत आणि मला बँकेने 5 शेळ्या दिल्या. पशुधन उन्नती केंद्र पाचोड्याबद्दल मला माहिती झाली, मग मी बँकेमध्ये बकरीसाठी अर्ज केला. बँकेने माझा अर्ज मंजूरही केला व मला 3 दिवसाची शेळी संगोपन कसे करायचे याची ट्रेनिंग दिली. बँकेने शेळी देण्या अगोदर बँकेने माझ्याकडून 10% रक्कम जमा करून दिली. त्या रक्कममध्ये बँक मला शेळीचा विमा व प्राथमिक उपचार मोफत करणार आहे. त्यानंतर बँकेने मला 5 गाभी शेळ्या दिल्या व मी बँकेची परतफेड होणाऱ्या पिल्लातून करणार आहे. परमिला कुमारी है, मैं अंधी गादा का निवासी। 2018 में जून में 1000 सुरक्षा राशि जमा किया और संस्था द्वारा 3 बकरियां मिली। गाँव में 10 महिलाएं भी लाभ उठा रही है। मेरा नाम कृष्णावती है, मैं महमदपुर के रहने वाली हूँ। जब मुझे गोट पशुधन बैंक योजना का पता लगा तो 5 गाभिन बकरी लाया, जिससे मुझे आज तक कुल 16 में 80,000 रुपये कमाए। पशुधन बैंक योजना बहुत अच्छी योजना है। मेरे अलावा और भी 12 महिलाएं इस योजना का लाभ आ रही हैं। हेलो। हेलो। हाँ, और Thank you, साथ sir. में हमने, हाँ यस सर, यहाँ पे हमने एक जो फाइनेंशियल है कि किस तरह से अगर एक गरीब किसान हमसे 5 बकरियां अगर ले रहा है तो उसको एट द एंड ऑफ ईयर उसका एनुअल नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये हमने एक दिखाने की कोशिश की है। तो अगर उस किसान को फर्स्ट ईयर जो होता है अराउंड 50,000 का उसे प्रॉफिट हो रहा है और सेकेंड ईयर उसको 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और थर्ड ईयर में उसको 1.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हमसे मिल रहा है। और ये एक जो होता है कि ना कि उसे बकरी पालन कर रहा है, पर इसको स्लोली एज एंटरप्रेन्योर का ट्रेनिंग दिया जा रहा है और वो एंटरप्रेन्योर बन रहा है। और फिर यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि हमारे फाइनेंशियल रिटर्न्स जो होते हैं वो क्लियरली डिफाइन है कि अगर हम वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसका रिटर्न किस तरह से होगा और हमारे रोल्स क्या होंगे, बेनिफिशियरी के रोल्स क्या होंगे, इस पे क्लियरली डिफाइन किए हुए हैं। फिर साथ ही में हमने यहाँ पर जो लखनऊ में एक पायलट किया हुआ है,
जो कि 2 साल का पायलट किया गया था, जिसमें हमारे कुछ एक्सपीरियंस है वो हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे 492 लोगों का ट्रेनिंग किया गया था। 82 क्लाइंट्स को जो थे हमने बकरी बैंक के जो हमारे क्लाइंट्स थे उनको 786 कोट हमने लीज पे दिए थे, जो कि 3 फेजेस में थी। और इन बकरियों की अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो उनका 1.9 जो था किडिंग का रेशो था। फिर साथ में अगर अडल्ट गोट्स में 5% थी और जो किड थे उसमें 8% थी। इसमें से एज अ रिटर्न हमें हुआ है कि 1124 किड हमें रिटर्न हुए हैं। और ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर 24.76 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसका रिटर्न हमें जो था 28 और अभी हमारे पास अवेलेबल है जो कि 4.34 लाख का है। यस सर, थैंक यू। Thank you, sir, for sharing your experience Yes. and bringing into light the pilot on Bakri Bank, which has been done by the Goat Trust. Thank you for that. And to provide insights upon the existing system for financial inclusion in India, how it is not moving through the initial number, which was 5 to 6%, which is very low. And we desperately need to enhance that to provide financial services to the last mile of the rural community. And the existing people or the financial service providers, namely microfinance and SHGs, who have been there. But here we see that the people who are already entrepreneur or have that spirit and have the capacity to develop services regarding entrepreneurship are able to get benefit of these financial service providers. In case of goats or goat-based livelihood, we need to have an ecosystem of other business services to develop the person as an entrepreneur. Now, you also mentioned about the traditional method wherein people can access other rare goats as for leasing, but here we see that the quality of asset provided is not good. And again, there is an absence of investment in the value chain for the growth. And later we have understood about the Bakri Bank concept, wherein quality asset is provided, finance linkage is provided, and also business services of the ecosystem are provided from backward linkages to forward linkages, which helps to grow the value chain and develop a person from error to an entrepreneur. And the major difference here is as compared to other financial service provider, where focus is on cash collection. Here the focus is on business services because asset is shared by both farmer and the promoting agency. So it's in their own benefit to provide services which will provide a better remuneration when the asset is sold. So thank you, sir, for providing the insights in the form of PPT. We will now be moving ahead with the panelist viewpoints on the pertinent topic. So I would first request Mr. Jatin Singh, sir, to share his views on the topic and would request also to have the video on while sharing their views. Over to you, sir. Thank you. Thank you. I think my video is on. Yes, sir. A short story to tell. So, in my life, I have taken decisions that I have been immediately regretted. One of them was starting SkyMed, and the other was starting Ground Cover. So, I basically Ground Cover is a rural insurance brokerage, and when I got in, because I saw that this was a large section and knows and insurance is very difficult to get a premium annuity. And then, as they said in presentation, that barely assets are insured, and something that should definitely be insured, and the government goes out of its way to insure it in terms of subsidized premium, is livestock. And it comes in when it's financed, but after that there are no rules. And when it was so on the larger animals, there's still a market, but when there are smaller animals, goats and pigs, the market is very, very small. So when about 3 years ago, when I attempted my first time to insure goats after getting my license, I worked with Thrift.
And then I came to know about these gold policies that were there. But there was massive skepticism that, what is the point? Even though the premium is very small, it's about 80 rupees for a 3,000 rupee annual. Then through network, I got in touch with Sanjeev ji. And then I started, he gave me an opportunity and really trained us. Working in rural and also in rural, the value proposition has to be very, very clear. And I'm happy to tell you, over the last year, we have done about 2,000 animals, 1,000, about 1,200 are cattle, and about 700 to 800 are goat. And the goat portfolio, because of Sir, has now, we've done it with him in Lucknow, and now we've also got with Eva Mitra, and now we are working on a system where we can grow it. So some issues. First, I was told that the reason why insurance companies don't insure is because there is a massive moral hazard issue. Everybody is a liar. The fact is, out of the nearly 2,000 animals that we done in court, we've got 17 claims, and all the 17 claims have been settled. Two, we work very hard on electronic enrollment, and that makes it more, using RFID, using pictures, using a combination of RFID and pictures, using AIML recognition of the tags, much easier for enrollment. Two, I discovered that the PSU insurance, so if you go to a private insurer like ICICI Lombard, you get a standard rate of about 4%, which I think is inclusive of GST, plus GST. But when I dug deeper and I looked at, say, New India or I looked at United, I found very good value proposition. So right now, for instance, we have a value proposition we found in United where it is 3%, and it is a comprehensive insurance that not only covers cattle or the animals, it also covers PA, hospicash, and property, and all for a grand total sum of 1,200 rupees. Where your property, sum insured is 30,000, your personal accident is 50,000, your hospitalization is 10,000, and you pay 2.5% for premium of depending on the size of the animal. So now I realize there is a very strong value proposition for electronically enrolling people and settling claims in livestock that actually makes a lot of sense and best guaranteed by PSU insurers because the claims ratio is very good. Although getting claims is painful, but nonetheless, if the paperwork is correct from day one, the claim will come. I have never had an issue in these cases. And I think my vision is that in the livestock market, because there is significant investment by the farmer in that livestock. So if you lose a buffalo in the middle of a lactation cycle, or your goat dies before eat, there is a significant loss of value. Now there are very reasonable premiums that could be activated, the use of mobile phones, it could be used to settle those claims. And I think over the last 1 to 2 years, 3 years actually, we've figured out the ins and outs, and now we're ready for scaling. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir, for your views. And why when we look at livestock insurance, specifically for goats, so the debate in the environment being that the premiums are low, the mortality being high, but how with gram cover and TGT coming together and starting with 700 ghosts in the past pilot, streamlining the inefficiencies of the system, wherein the goat trust has provided services to the farmers so that the mortality remains low. And through e-enrollment, we are able to get claims settled faster and transparently. So this is here how we have done the synergy and have been able to prove a pilot wherein insurance can be possible for small livestock, and then later it can be expanded to all other insurance related commodities with the farmers in the rural communities. So thank you, sir, for your summary and the experience sharing session. I would now request Dr. Arun Ramesh Joshi, sir, to please share his experiences on the topic.
Audio is mute, sir. Audio is Please turn your mic. Sorry. Thank you very much. It was really, really good presentation, very thought-provoking, and a good video clipping also. And what I heard from the panelist also was very, very heartening. My interaction with Sanjeev ji is, you know, it's maybe it's recent, but then we know each other from various sources, maybe digitally, possibly. और जो मेरा इंटरेक्शन इनके साथ में होता रहा है, and I think the Goat Trust is one of our valued partner also. We are working on one project and we look forward for extending such partnership in many other areas possibly. So the topic is very relevant. I believe that the livestock, and as it is said, the stock basically is a financial instrument in itself for the livelihoods of the poor. Goats are always attracting me for various reasons, because the returns are quicker than the larger ruminants. The caprines are very different than the bovines. The problem with rearing caprine and understanding the caprine is very, very different. It's very difficult. Unfortunately, one of the most neglected lot in the livestock sector, and that's very unfortunate. The reason may be very many. We have very poor research put into the whole thing. I only know that there is one center in Makhdoom. The ICR is putting whatever effort they are trying. The university system is not that keen. You hardly find the caprine experts in the veterinary science side. Very little research done. The important point, and I would be talking more from the point of view of technology basically, because the other issues are being dealt by the people who are into the leasing and financing side. I'm not from the finance side. I'm from the production side, from the farming system, and I identify myself as a landless farmer. Although I have never reared a goat, but I've been working with the goats for a long time. My understanding about goat is that we do not really know the carcass ratio, what it should be the ideal carcass ratio in the country. That's very unfortunate. And the entire business of, you know, leasing, financing, insuring, it all revolve around the carcass ratio. We don't know exactly, and that is why our feeding management is extremely poor. The goats are always, you know, ill-famed for their destruction to the ecosystem, which is really, really poor way of looking at the poor animal. This is not correct. The kidding efficiency and the kidding intervals are the two other things which are basically relates to one on their feeding management, breeding management. But at the same time, when you see the goat, the livestock as, you know, a financial instrument in the hands of the poor, and particularly the most vulnerable, the woman, I think it is very important to see the kidding efficiency and the kidding interval. It is again really, really poor. अगर आप इसको मैं हिंदी में कहना चाहूँ बाकी और सभी साथियों के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि जो बकरियां हम लोगों के पास देखते हैं, दुर्भाग्य से वो नॉन डिस्क्रिप्ट होती चली जा रही है. हमको पर्पस मालूम नहीं होता, हमको कैसे ब्रीड रखना है ये मालूम नहीं होता. उनकी जो हमारी प्रजनन की प्रक्रिया है उसके अंदर बहुत सारे व्यवधान है, और उसकी वजह से उनका जो किडिंग इफिशियंसी है वो गड़बड़ा जाती है. और अगर किडिंग इफिशियंसी गड़बड़ाती है तो निश्चित रूप से जो रीपेमेंट अगर गोट बैंक के अंदर हम देखें तो वो डिफिकल्ट हो जाते हैं. तो यहाँ अगर मैं इसको सीधा सीधा कनेक्ट देखता हूँ, तो यदि हमको इसको एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखना है, चाहे हम रिटर्न्स के रूप में देखें, चाहे हम रीपेमेंट के रूप में देखें, शायद किडिंग इफिशियंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे नजर आता है. यदि बेहतर किडिंग इफिशियंसी होगी, क्वाड्रोप्लेट्स हर समय होते रहेंगे, तो उसकी जो रिटर्न रेट है पर यूनिट, पर एनिमल, पर डो, वो शायद बहुत अलग होगा. और इसके लिए शायद बहुत सारे काम करने की जरूरत है. दुर्भाग्य है कि सिविल सोसाइटी में हम सारे लोग जिसको बोलते हैं
ग्रामीण गरीब समाज के साथ काम करते हैं, स्त्रियों के साथ काम करते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं अक्सर कि किडिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के रास्ते क्या हो सकते हैं। उसके ऊपर शायद गोट इंस्टीट्यूट बहुत सारा काम करता है और मेरी अपेक्षा है कि वो अगर इसको ज्यादा महत्व देने लगे तो बहुत बड़ा शायद अंतर आ सकता है, खास करके इसके रिफंड रिटर्न और लीजिंग वाले इश्यूज के अंदर। दूसरा, अगर इंश्योरेंस के साथ में जोड़ के देखता हूं मैं जब भी, तो जब पशु का इंश्योरेंस कर दिया जाए और अगर बीच समय में पशु की जिसको बोलते हैं ना कि अनफॉर्चुनेट उसका अगर डेथ हो जाए, वो मर जाए, तो उसके दो कारण ज्यादातर देखने में आते हैं और उसके ऊपर भी बहुत कम रिसर्च हम कर पाते हैं और पशु को समझ नहीं पाते के प्राइम को। मुझे लगता है कि इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या है निमोनिया और इंट्रोटॉक्सीमिया की, और ये दोनों फिर से फीडिंग मैनेजमेंट के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप देखें इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक साउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इसका टेक्निकल साइड देखना बहुत जरूरी है। कई बार हम इन चीजों को सिर्फ ये सोचते हैं कि हम उनको टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, पर उस टेक्नोलॉजी को अगर हम कन्वर्ट करके देखें उसके फाइनेंशियल्स के रूप में, तब हमको समझ में आता है कि कितना महत्व है। हमारे यहाँ रिसर्च के ऊपर ग्रांट देना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं अगर अपना CSR से चाहूं तो हम कोई रिसर्च ग्रांट नहीं दे सकते, दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी सरकार ने रास्ता खोला है, मगर मैं अपने मैनेजमेंट के पास में जाऊं या किसी से भी कहूंगा तो शायद मुझे थोड़ा और समय लगेगा इस बात को स्थापित करने के लिए कि इसके अंदर इस प्रकार की ऑपरेशनल रिसर्च की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो बक्स होते हैं उनकी विरिलिटी के बारे में भी अगर हम सोचें तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर हम ओपन ग्रेजिंग रखते हैं और साथ में अगर मिक्स हर्ड रखते हैं जिसके अंदर डो और बक्स को साथ में रखा जाए तो फीडिंग एफिशिएंसी खराब कर देते हैं, उनका एस्ट्रस साइकिल को गड़बड़ कर देते हैं और फिर वो अल्टीमेटली फाइनेंशियल्स के ऊपर बात आ जाती है। तो बक्स को भी देखभाल उसकी टेक्नोलॉजी को समझना होगा। यहाँ पर बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या गोट बैंक तरीके संगठनों को या इंश्योरेंस कंपनियों को भी इन विषयों को जोड़ के देखना चाहिए ये कि क्या इनके ब्रीड्स के साथ में, इनके फील्ड के साथ में और इनके टोटल ओवरऑल मैनेजमेंट के साथ में किस तरीके से ये फाइनेंशियल्स कनेक्ट करते हैं। हम दोनों को जो आइसोलेशन में देखते हैं तो मेरा ये मानना है कि हम गोट रियरर है उसके साथ में एक ग्रॉस इनजस्टिस करते हैं। तो शायद भविष्य में हमको यदि गोट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखना है किसी पुअर हाउस होल्ड के लाइवलीहुड में, गोट बैंक को बैंक के रूप में स्थापित करना है पूरे देश में राष्ट्रव्यापी स्तर के ऊपर एक आंदोलन रूप में, तो मुझे लगता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरेंस के करने वाली इंस्टीट्यूशंस को इन दो विषयों के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार रखना पड़ेगा। शायद इसके ऊपर थोड़ा अनुसंधान करना पड़ेगा। शायद उस अनुसंधान के लिए जो संगठनों को, खास करके गोट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या ऐसे और संगठनों को जो जरूरत लगती है समय के साथ इनको संसाधनों की, वो इनके साथ, क्योंकि गोट का रिसर्च बेसिक रिसर्च से ज्यादा टैक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल के रिसर्च की आज जरूरत है, जो दुर्भाग्य से हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमको गोट फीडर्स बनाने हैं तो हमारे पास में आज भी मखदूम के कुछ जो आइडियाज हैं कि वो आप एक फीडिंग बकेट बना दीजिए, फीडिंग पिरामिड बना दीजिए, या उनको फीड को डिफरेंट टाइप के फीड्स देना है, तो हम कर ही नहीं पाते। कार्सस रेशो बढ़ेगा कैसे जब हमारी गोट्स खुली चराई करेंगी और उनके पास में सिर्फ मेंटेनेंस राशन होगा। तो नेचुरली उनका, आज हम पूरी दुनिया में देखें तो हिंदुस्तान का कार्सस रेशियो हमसे बहुत छोटे देशों की अपेक्षा बहुत नीचे है। मेरे ख्याल से हम बॉटम के ऊपर आते हैं और कार्सस रेशियो ही उस लाइव स्टॉक की लाइव वेट को गवर्न करता है और उसके बाजार मूल्य को गवर्न करता है, और उसका बाजार मूल्य यानी कि फाइनेंशियल है, उसका बाजार मूल्य यानी उसकी इंश्योरेंस वैल्यू है। तो इन सब चीजों को शायद कनेक्ट करके देखने की जरूरत है। मुझे आज का ये वेबिनार का विषय बहुत
उम्दा लगा। मैं संजीव जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देता हूँ। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू को, क्योंकि हम इसको कनेक्ट कर ही नहीं पाते कभी भी। हम टेक्निकल बात करते हैं तो टेक्निकल बात करते हैं, अगर हम सोशल या बात करते हैं तो उसी तरफ ध्यान देने लगते हैं, या अगर हम फाइनेंशियल्स की तरफ ध्यान देते हैं तो सिर्फ इनके बीच का जो कनेक्ट है, वो मिसिंग कनेक्ट को अगर हम ध्यान रख लें और एक टीम के रूप में साथ में काम करें, तो शायद हम बेहतर जस्टिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर इस कंटिंजेंट को। क्योंकि आप देखिए, ये समझना जरूरी होगा कि हर्ड साइज, herd composition or herd quality depends on this local ecology and particularly the availability of water. जैसे ही पानी की उपलब्धता बदलती है, वहां कैप्राइन से बोवाइन के ऊपर लोगों को मैंने शिफ्ट होते हुए देखा है बहुत तेजी से। तो इसका मतलब है कि हमको उसके साथ में भी इसको कनेक्ट करके देखने का प्रयास करना चाहिए। मुझे आप लोगों ने मौका दिया बोलने का, मेरे बहुत सारे पॉइंट से ये पशु मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता है, और मैं अपने संगठन में, अपने संस्थान में कोशिश करता हूं कि अगर हमको महिलाओं के हाथ में आर्थिक शक्तियां देनी है, खास करके ग्रामीण महिलाओं को, खास करके भूमिहीन महिलाओं को, तो मुझे लगता है कि शायद ये एक सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है। बहुत साधुवाद संजीव जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे बहुत सारे साथी, मेरे नाम से आप देख रहे होंगे, बहुत सारे मेरे स्क्रीन पे ही दिख रहे हैं, वो सब मेरे अपने साथी हैं। और मैंने सबको निवेदन किया था कि आप सब आए, बैठे, देखें, ताकि हम गांव में ज्यादा बड़ा काम कर सके। सरकार की प्राथमिकताओं में लाइव स्टॉक सबसे ऊपर है, क्योंकि गोट रखने से या पोल्ट्री रखने से हमारी जो खास करके frequency of cash inflow in a farming family increases, raises like anything। और आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि frequency of cash inflow हम families में कैसे बढ़ा दें, और साथ साथ हम disposable cash in the hands of the poor कैसे बढ़ा दें, ताकि उसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसकी परिवार की अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके। Thank you very much, so kind of you। Thank you, sir, for your insights on the topic, and how caprine has been neglected in the livestock policy. There has been an absence of research on the stated carcass ratio. So what should be the carcass ratio achievable, or to be achieved carcass ratio in the country? What should be the kidding intervals and kidding efficiency, or the kidding rate per goat? So thank you for that. And how goat rearing is right now at subsistence. So why we are not able to get a good carcass ratio or better kidding intervals and better kidding efficiency is goat is purely subsistence based on grazing. There is no investment in the value chain, and how we can move it to the significance part. So there you have prompted the need for action research, and we are glad to inform under the Goat Trust platform, we have been doing research on artificial insemination. We have piloted certain goats and able to achieve around 50 to 60% conception rate. So here we target the kidding efficiency, wherein we take the semen of high genetic worth goat with a compatible mother goat, and here we are able to achieve higher kidding rate. And again, through bank model, we are looking to target the working capital crunch with the farmer, which inhibits him for the investment in the value chain. So we are also targeting that through Bakri Bank. Thank you for your points, sir. And we also hope this will stimulate the actions towards policy to have action research instead of centralized research on the needs of the rural communities. So thank you, sir. I would now request Dr. R.S. Reddy, sir, to share his experiences. Yeah, good evening. Good evening. Going to Mr. Sanjeev and his team at IAGMA, as well as co-panelists. I do represent NABARD. For the last few years, I was with NABARD, and then right now I'm working with Andhra Pradesh State Cooperative Bank as its CEO. When you look at livestock finance, which is one of the major issues in
your sheep or goat rearing. Figure that was put in the presentation was that hardly 5 to 6% of credit only goes to livestock. It may be dairy, or it may be for sheep and goat. That may or may not be true, because much of the finance nowadays goes through self-help group mode, or sometimes even through the hugely popular Kisan credit card mode. Normally, Kisan credit cards are given for crop loan purposes, but since it is very easily available, not much of documentation, people do prefer that in the name of crop, they take the loan. And our studies from Bankers Institute of Rural Development as well as NABARD do present that around 1/3 of the credit goes for animal husbandry sector, and more so for purchasing 1 or 2 goats or 1 or 2 sheep. Right. There are certain issues even in our processes. Like still we are in the traditional mode, fixing the limit, fixing the size limits. Like we say that to finance, the minimum viable size is somewhere around 10+1 or 20+1 or 40+2 or 500 plus 25, all with predetermined ideas. I think these will not work out in the field. The one which IAGMA has floated and popularized, like the Bakri Bank leased model, is a right model there. And how do we come into that stream? Right now, even Andhra Pradesh State Cooperative Bank is piloting a new approach called livestock credit card. Right, under this credit card, we are planning, and we have already initiated that up to 2 lakh rupees, people who are rearing, it can be small ruminants like sheep and goat, or buffaloes or dairy, they are eligible as per their animal size. This amount is mainly to meet the working capital requirements. Just now I heard from Dr. Arun and also our coordinator saying that Bakri Bank, wherever they are establishing, they require, the farmers do require some support for working capital requirements. So the bank is making a breakthrough in rural areas through this livestock credit card, which is far more flexible and timely, and it's also affordable. The rate of interest on this product is just 7%, and if the farmer is regular in repayment, it will come down to 4%. The government of India is cross-subsidizing for prompt repayers by 3%, right? And the initial experience for us in some of the districts of Andhra Pradesh is that it's very good, and people are taking up this product because many hassles relating to animal husbandry finance, like huge documentation, security related aspects, and then our funny way of stipulating norms, like you should finance only for 20+1 or should finance for 40+2. All these norms are out, and the flexibility of the goat rearing or the sheep rearing with the different sizes and what to purchase, when to purchase, and all these things are built into this livestock credit card, and it has become a really popular product. And I can also suggest, if IAGMA plans to set up Bakri banks in this part of the world, in Andhra Pradesh, will be the first one to move in to support your farmers as well as Bakri Bank in terms of bulk loan facility, so that your number can be more. The biggest what I can say advantage of these Bakri banks is that the members will not have the financial burden on their head. Bakri Bank may take up, right, or the NGO which is piloting this concept may have the burden of repaying to banks, whereas the farmers, they doesn't have the installment burden. So that is one of the beauty of this micro leasing method. So in if such interventions can come up in Andhra Pradesh, we are there to support. Right. So these are some of my ideas, right? Going from a traditional mode to the current mode of giving them a credit card to all the sheep and goat farmers. I also like to bring to your knowledge that we implemented through NABARD, we implemented a project titled Credit with Dignity,
most of these sheep and goat farmers may not have adequate time to approach banks. They say that at least 7 times you have to go to a bank branch to get a loan. So they don't have so much of time to go to these branches, wait there for hours to get a loan, small loans. So we did something different. Why can't we deliver credit at the doorstep of the farmers? We did a pilot project in a district called Chittor of Andhra Pradesh. You'll be surprised. Without any security, we gave around 1 lakh rupees, and the wisdom and the choice of breed, where to purchase, when to purchase, what to purchase, all these things were given to the what we call the illiterate goat rearer. But you'll be surprised that they are the better judges. They purchase better things, right? And not even a single pie was not means there was no NPS in the entire project. So we could see that if we can provide them on time at their doorstep, things are far better. So in the same way, we are trying with this livestock credit card, giving the flexibility to the farmers. We hope that with these interventions, we'll be able to help these small and marginal farmers who have these small ruminants in a better way. And we hope that this product will be our mainstay in the years to come. Thanks for the opportunity. Thank you, sir, for sharing your views and the efforts of NABARD and Andhra Pradesh Cooperative Bank on the field of livestock finance, and how the financial inclusion numbers can and were a bit less on the projection, wherein you mentioned that Kisan, in terms of Kisan credit card, 1/3 of the finance goes towards livestock. So people are availing here to learn. The point to learn is that flexibility in finance is needed, which Kisan credit card is trying to project. And learning from their experiences and their gaps with Kisan credit card being that there is absence of, in the methods, there is absence of flexibility, as the number of livestock has to be of a certain number. So here we pitch, or the NABARD and Andhra Pradesh Cooperative Bank, which is livestock credit cards, where limit is up to 2 lakhs, and it would target the working capital crunch with the livestock rearers, which is the main reason that inhibits investment in the value chain and then later growth of the value chain. So there is, you also mentioned another innovative product named with Credit with Dignity, wherein the issues with farmer finance of regular follow-up, going out to the branches, and we understand how crunched are the rural branches in India, managing such a large population. So here the innovation was to provide finance on the doorstep. I'm sure there would have been great efforts in identifying and motivating farmers, and that's why there has been a zero NPA. So there needs to be an agency which takes care of this identification, supply of finance, and farmers themselves are capable enough towards breed identification and utilize that sum for their benefit. So thank you, sir, for that on the way ahead regarding finance. I would now request Mr. Ritesh Sinha to share his views on the topic. Hi, thank you. First of all, very thankful to Sanjeev ji for inviting me to be part of the distinguished panel. And a very good evening to all the participants listening to me. So I will start with talking about the finance. What is the problem in accessing finance? I would say one, of course, is the mortality. And then we talk about mortality, or the back end of it will be the feed management, the disease management, and things like that, which has already been talked about. The second is, briefly, we talked about the value chain. Where do we stand as far as the value chain is concerned? Are we only talking about goat, or also the allied, businesses that could be created along with a goat farm? So if we look at that, if we address mortality, I think the financial institutions will be more than interested to look at it as a very formal, structured, means to finance, or a scope of financing will be there. I'll little bit talk about the challenges that we face today. It's largely informal.
and some of the dilemmas that we face today are like, institutional versus individual. Because you cannot manage a breed. It varies from person to person, individual to individual, how they are, upkeeping, taking care of the health, the feed and all. Then there is a significant variance in breed, which is very locally contextualized. So when we talk about value chain, a goat-based value chain will vary from a Rajasthan to a Bengal to Maharashtra. And then do we have local contextualized value chains developed, or there's a scope of developing in the value chains based on the regions and on the breed? The purity of the breed also is very important, because unlike some of the Western countries, it certifies the breed. I don't think we have, maybe Sanjeev will be able to throw more light on this, but as of now, I don't think there is a very structured process of certifying the breeds. If those things are addressed, I'm sure the mortality will be reduced, and accordingly, more and more value proposition will be observed by people interested in promoting this thing. So I will a little bit focus on the Goat Promotion Resource Center, that as part of HDFC CSR. So it's purely CSR, funded under CSR, and the idea was that it's a hybrid model. So it's not very individual based, but individual owned. So it's kind of, I would say, a social mutual fund where the ownership lies with the beneficiaries who invest, but the selection of the breed depends on the institution. So an institution has been created, which is currently being handheld by an expert agency, which identifies breed, and it is a very strict mechanism of selection of the breed. So if you have too much variance, then the entire breeding process goes awry, and thereafter it will be very difficult to manage the purity of the breed, and reduction in mortality and feed and everything else will not be possible to be achieved. So within this center, there are about, it's a setup for about 1,000 goats. It has an in-house feed management system also. So within the four walls of the institution, there are plantations already taking place, and one experimentation is going on with Moringa fortification in the breeds, and currently it is working with the beetle breed and looking at both milk and meat. So when we talk about value chain, we are looking at coming up with cheese, and even goat milk, tetra packed goat milk in small pouches to be made available to be sold off shelf. So with that kind of understanding, if there is a value proposition, I would believe that people would be more and more interested. Insurance is another big issue, and insurance is a directly correlated thing with mortality. If the mortality is high, it will be very difficult, or even the premium will be too high. So the idea is to start working on reducing the mortality, bringing it down to the levels of 2%, 2.5%. That will definitely help. Then the support mechanism. So in a village, in a set of villages, let's say about 20 villages, we have one center which is looking at this kind of a hybrid model. People remain invested, people take support from, let's say, SHGs and all, but the goat is procured through a proper screening mechanism by the institution. The person remains the owner of that particular goat, but the management is centralized, and the management also takes care of the entire market value chain. Hopefully things will start to take shape in a more formalized way. Having said that, I would also like to highlight that it cannot be a completely formal business driven model, because ultimately it has to generate value for the society, for the individuals, for the communities who have used goat traditionally as a emergency cash conversion thing. So, and in the current scenario where a lot of migrant workers are going back to their hometowns, they may or they may not stay, but there's a lot of uncertainty lying there. They were landless, or their land was not productive enough. So in that light, I think
goat tree is a very, very important pillar as far as the concern of having local livelihood generation is concerned. I think this has a lot of potential and addressing that. As a CSR, we have promoted goat tree. I talked about the goat promotion resource center, but apart from that, in about 1,000 villages, we are also investing in looking at the individual based model, particularly in states like UP, Bihar, Jharkhand, even Assam, trying to ascertain what will be a good model which has a market linkage. So yeah, that was a short thing that I wanted to talk about. I'll be happy to take questions on this. For the timing, yeah, that's it from. Thank you. Thank you, sir, to share your experiences through CSR on livelihood promotion via goat rearing. You mentioned the impediment for finance or insurance is mortality. So how do we address this mortality? And so here we need efforts on the input front, and there has to be an institution which will be coordinating these efforts. So you mentioned the example of Goat Promotion Resource Center and how the funds are a social mutual fund here. Then their efforts on breed and feeding, which is primary towards reducing mortality, and the inclusion of moringa in feeds. And later on the support mechanism, where is the primary health care, again, that would be reducing mortality. The centers mentioned as 1 center per 20 villages. Later on, this was on the backward linkages. When we move on towards the forward linkage, apart from goat, there are allied business as well. So you mentioned about goat milk and possibility of marketing goat milk via Tetra Paks. So with Tetra Paks, we get higher shelf life, around 6 months shelf life. And that would be logistically easier compared to marketing of fresh milk. So thank you for that, sir. Thank you for showing us the possibilities and the efforts on back end. I would now request Dr. Balaswamy, sir, to please share his experiences on the topic. Yeah, good evening to all of you. Yeah, I truly appreciate Goat Trust for giving this opportunity to me to get the knowledge from all of you first thing. Though I am a veterinary doctor, I worked with this rural insurance and insurance of cattle and all these things. We did it for a long time back. So I wanted to tell one experience what I have when in fact, I joined in New India Assurance Company in 1985 with my veterinary background as a specialist. In 1988, I was working in Andhra Pradesh. 2-3 farmers, they started goat farming, stall-fed goat farming in Andhra Pradesh in a place called Anaparthi. They were very enthusiastic. I was also very young. I was also totally involved with the scheme. I insured them. Unfortunately, the goat farming became a unsuccessful venture because there was no good management. Most of the animals died due to pneumonia. What Joshi Sir told, there is no good management. Thereby, all the farms in Anaparthi area, they are all wind off. All are dead because of pneumonia and other diseases. What we could understand is, the reason is acclimatization. They brought the breed of, I remember as Mulberry from Kerala state somewhere. The climatic conditions of Andhra Pradesh are not suitable to them. There are no people who can take care of the goat the way it is to be done, results in loss. What I wanted to say is, yes, all the speakers, Joshi Sahab has given the management, what is the necessity and all these things he has told in depth. And all our panelists, they have discussed in length about the management, veterinary care, and the schemes to be used and all these things. So the role of insurance, I would like to say. So in fact, everyone is aware that New India Assurance, they got offices throughout the country, more than 2,500 offices. All the offices are willing, or they will show interest to insure the goats. There is no problem at all.
In fact, in the beginning, we were only the people, we have devised the scheme where, we made it as two schemes. Normally from a scheme animal and non-scheme animal that time. It starts from fourth month to six years if a farmer is rearing the goat as a poor man's cow, where he is getting the kids and triplets, and he is selling the triplets. There is another scheme that is called for sheep. We use it as a ram lamb scheme, where from the day one or after 1 week they will purchase 10 to 20. They will grow it for 1 year or 1 year or 1.5 years, and they will sell it. So here the truth is, only the thing is, we have to ensure the present market value of the animal, and we have to ensure to see that for becoming a successful scheme to the farmer, the animal should survive by providing a proper veterinary, proper treatment, proper feed, proper managemental practices. Thereby they will grow the animals properly, and if the animals are vaccinated against all infectious diseases like rinderpest or foot and mouth or whatever, HS and all these things, vaccination is to be provided. If we can do this by unforeseen event, any accidental events like diseases or accidents, flood, cyclone, whatever the peril you say, if there is a loss, that can be reimbursed immediately. Now, in fact, this product is a very small product where the insurance premium is very small. As our friends told already, the 2% of the sum insured or 3% like that. The premium depends upon the mortality rate. That is what the viability of the scheme depends upon its management. If the management is good, the premium rate will definitely go down. If the mortality is high, automatically the insurance companies will try to increase the premium rate, because insurance companies are nothing but an institution that meant for managing the scheme, where they collect the small premiums and they will distribute the premium to the people who are at loss. That is the principle we use for insuring any asset. It is not a livestock or sheep and goat. Anything is, insurance company act as an institution to manage the scheme. That is the underlining theory behind it. Now, what I wanted to say is, it is more easy for Goat Trust or any bank or any financial institution to have a kind of bank assurance or a master policy where whatever the finances they do, that can be insured as a lot, giving the declaration of the farmers and the number of goats what they have financed. So that as per the scheme, if it is for 1 year, the policy can be issued for 1 year, and if anything happens during this 1 year to the goats, that can be paid. Now, in fact, we can devise the if it is a what you call lambs, small one, then we have to prepare a valuation table depending upon the age or weight of the animal. Maybe the breed weight will differ from place to place based on the local conditions or local valuation of the doctor. Based on the breed and weight, we can finalize a kind of fixed rates from 4th month, 12th month, and during this period, if any loss arises based on the age of the animal, which is issue is the identification of the animals. If it is done on the basis of a if a financial institution is doing it, if the farmer is having only one animal, if it is identified through their local network, even the insurance that what I call identification cannot. There is no need that we should insist on the identification, because normally in insurance companies will put a tag to the ears.
And in the event of claim, they have to produce a picture and then the photograph or with the ear tag, then we will be settling. Now with this digital world, if the management is done very well, if claim arises, a simple WhatsApp picture or video which can be uploaded to the system into our designated WhatsApp recording system. Thereby, the truth can be well identified and the claims can be settled very easily. And we can also think of having a micro agents who can work in the village, in each village, or maybe for 2-3 villages, one micro agent can be appointed who can be trained on this particular method of what you call settling the claims. And the prominent leaders, maybe the village panchayat or the cooperative society manager or some high school headmaster, this type of people jointly they can do a panchanama that this animal is dead, this farmer is at loss, and this is what with the picture, if it is produced digitally, that can be settled. Settlement of the claim is not an issue. Only the thing is proper identification of the farmer, identification of the asset, and if these things are done well, I think it is not an issue. Even the settlement can be done on agreed value basis, and the claim can be paid within, maybe nowadays it is not at all a problem because everything is digitalized. Within 1 week or 10 days, the claims can be paid, and he can once again refinanced so that he can purchase the goats, goat or goats to his choice, so that can be once again insured. In my opinion, the presentation I could not able to hear in full, but here asset is financed, not the money is financed. So goats are given from the goat bank. It is a very novel idea. I think if we have a policy with directly with the goat trust or goat banks, it is easy to administer this particular scheme. I surely appreciate the good work being done by Goat Trust, and I also thank for the knowledge shared by all the panelists like Joshi Saab, Reddy Saab, and Jitin, and everyone. From my side, I hope my information is sufficient on point of insurance. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. For your insights, and particularly the case that you mentioned, wherein people or the rural farmers started goat farming, they brought in the best breed. But while bringing the best breed, at times its compatibility with the environment is not thought well, which leads to higher mortality. So in terms of breed, we should be looking out for the compatible breeds in the area. Coupled with the compatibility, after we have brought the breeds which are compatible, we also need management services, which were further defined into feed, veterinary care, vaccination. So this is what is the primary, as discussed earlier as well, primary input for reducing the mortality and then generating interest for the financial institution to cover this sector of the livelihood. For the way ahead, you have mentioned that insurance is a service provider, and to the service provider, we also need a support on the grassroots, where you mentioned the need for or the possibility of micro agents and agencies such as Bakri Bank, which can take the insurance and then disseminate it among the rearers. So through this manner, the interest of the insurance agency can be capitalized towards the need of the farmer with the person who or the agency managing in between. So, and the possibility with the technology, IoT solutions, wherein we can move away with the tagging of the goats. As for the Bakri market, if the goat is tagged, then the value of the buck is not realized. So at times farmers are not willing for tagging the goat. It also has certain behavioral aspects in the community, traditional things which don't allow them to move towards tagging. So thank you for sharing, sir, the possibilities and the way ahead. Thank you. I would now request
Mr. Sanjeev Kumar to share his insights. Yeah, thank you to all of you. I mean, Vasudhan Bank or this bank, Bakri Bank has been one of the dream projects for me last almost 7 years. And I'm thankful first to Dr. Joshi sir, the first time I met. I mean, sometimes the passion motivates you. So having your own work and then the whole passion I saw in you is something which made me to call this webinar and press this issue much on a larger scale. Dr. R.S. Reddy has been involved. I think he's the one person who liked this idea on the day one. When we are experimenting almost, he was here in the bird and has been very good friend to whole concept of this. So speaking and listening to him is of course a pleasure for me. Dr. Balaswamy recently introduced but the way you found it, many practical things and commitment with the institutional insurance, not an individual always. Can we go through again? Delighted me in personally because I see now things are very easy to get it a scale. Mr. Ritesh Sinha already doing a sort of pilots and looking into value chain, which GoTrust has done on a significant scale. All words he said we have done. So I would say, Mr. Ritesh, we can think around it. There has been done, there has been experiences, there has been failure. And when I start my speaking, perhaps a lot of failures also comes in this process. But then the standardization takes a time and then we are able to make a model. But I will start two things which always attracts me in bank. Bakri Bank especially. One is the traditional wisdom of India. We normally neglect in a while designing the finance, sometimes even technology. This system has been Indian system. It's basically a villager system. How this idea came to mind, I will not go detail into the story, but it's really from Gaya district in Bihar. I was doing a study. That was a very poor family, and how she has been surviving by taking goat from her own village motivated me to us what we are discussing now as a Bakri Bank. It is villagers program. It's a villagers design or traditional way of doing the goat lending. The second three questions we have in the mind while discussing very quickly. One is the vulnerable communities, ultra poor, poor families. When we talk about goat, we largely have to address in those communities who have illiterate. Education is very low. So I will also convert in Hindi for many of our clients, many of our attendees in fact. ये जो गरीब लोग हैं जिनको आप गांव में देखते हैं, इनके लिए जब लाइवलीहुड की बात आती है तो चैलेंज आते हैं बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ा चैलेंज जो सीएसओ को आता है कि आज की तारीख में आपको भी सरवाइव करना है और वल्नरेबल कम्युनिटी तक भी पहुंचना है। तो मैं बकरी बैंक का एक नया जो मुझे पर्सपेक्टिव दिखता है कि ये सस्टेनेबल एफर्ट है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, नॉट ओनली कम्युनिटी। हम ऑर्गेनाइजेशंस में जब इन्वेस्ट करेंगे गोट के फंड में तो बहुत बड़ा फंड लगता है एसेट बिल्ड करने में। अगर आप 100 लोगों को 5 बकरी देते हैं 500 गोट में, टोटल अगर फंड देखेंगे तो ये 50 लाख 60 लाख रुपया होता है। तो जब तक इसको आप बैंकिंग में ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, ये दिया हुआ चीज सरवाइव नहीं करता है। मोर्टलिटी बहुत हाई है और मैं कंट्री के सारे प्रोग्राम डीपीआईपी के दिनों से लेके अभी तक बता सकता हूँ, या तमिलनाडु का प्रोग्राम आपसे चर्चा कर सकता हूँ कि मोर्टलिटी बहुत हाई रही। रीजन बीइंग कि ये देने में जो हम 10% 5% लेते हैं और सर्विसेज हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं। बैंक आपको प्रॉफिट देता है। प्रॉफिट डज नॉट मीन कि आप इसे खर्च करो, आप इन्वेस्ट करो, री इन्वेस्ट करो उन कम्युनिटीज में। जैसा वैभव अपने प्रेजेंटेशन में बता रहे थे कि गोट का अगर हम मेमना लेते हैं तो हम प्रोड्यूस शेयर करते हैं, हम रिस्क भी शेयर करते हैं। नॉर्मल फाइनेंस और लीजिंग में ये अंतर है। तो इसकी डिटेल्स आपने देखी है। मैं सारे पार्टनर्स से एक मेरा आग्रह भी है, ये आइडिया है, एक सोच है। गोट ट्रस्ट और आईएजीएमए जो है ये बेसिकली पायलट करके एक मॉडल बनाना चाहता है। और थैंक्स है हमारे जो पार्टनर हैं जिन लोगों ने सपोर्ट किया। मैं पार्टनर भी छोटा सा लगता है मुझे क्योंकि मिशन है। और
डॉक्टर जोशी सर का, जिन्होंने पहली मुलाकात में ही कही कि इसको करना है, इस तरह से करना है इसको, मैं ऐसे इसको देख रहा हूँ, और जितनी टेक्निकली चीजें उन्होंने रखी ग्रास रूट पर्सपेक्टिव से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ये इस पायलट को हम आगे कर पाए, ये मेरे ड्रीम है। मैं फिर से कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल ड्रीम्स में से भी हैं, और जब तक कुछ पर्सनल भी होता है तब आप उसमें जी जान लगाते हो। और हमारी पूरी टीम का जो 7 साल से इस पे काम कर रही है, मैं डॉक्टर RS रेड्डी सर का भी इसमें थैंक्स करना चाहूंगा। जिस तरह जाके इन्होंने बहुत सारी लर्निंग को अभी वहाँ किया है, मुझे बहुत खुशी हुई। और हमें लगता है कि हम तो 7-8 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हम इसे बड़े स्केल पे आंध्रा में करना चाहेंगे सर। और हम ये दिखाना चाहेंगे जो मेजर पर्सपेक्टिव है कंट्री में, कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं, होप्स क्रिएट हो सकते हैं। खास करके जो माइग्रेंट अभी बैक आए हैं पोस्ट कोविड इरा में, इनकी लाइवलीहुड का जो चैलेंज है, इसमें गोट और इस तरह के मॉडल में गोट, क्योंकि इतने लोगों को हम नहीं दे पाएंगे ऐसे, इवन लोन भी तुरंत दे पाना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर आप लीजिंग जैसे सिस्टम करते हैं, जहां उनको EMI नहीं देना है, जहां उनको अगले महीने कोई रिपेमेंट नहीं है, जहां इंश्योरेंस हम पहले दिन कवर कर सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कलेक्टिव है, इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं है, यहाँ बैंक इंश्योरेंस लेता है। इसी तरह से ये मार्केटिंग में भी एडवांटेज है पशुधन बैंक, जो आज गोट ट्रस्ट सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है कि हम पशु बाजार बना के इनका मार्केटिंग किड्स से, कब बकरी में कंसीव हुई, कब बच्चा देगी, अगले 1 साल की मार्केटिंग प्लान हम तैयार कर रहे हैं। और ये हम तभी कर सकते हैं जब गोट का डाटा हो और गोट इस तरह के सिस्टम में हो। तो मैं आप सबका एक तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हितेश जी, आपको भी, कि जो आपने 1000 गांव में किया, क्योंकि गोट ट्रस्ट एक मिशन है और उसमें जहां भी हम लोग इसको आगे ले जाएंगे, और बाकी साथियों को भी जो अटेंडीज हैं, कि हर कोई इस काम को कर सकता है। आप 15 गोट से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1000 गोट का गोट बैंक होता है, गोट बैंक 20 गोट का भी होता है। अगर एक गांव में 20 गोट लेके आदमी हमें से करता है, ये भी हमने करके देख लिया, आपको भी एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। तो हम गरीबों का नहीं, हम आपकी भी बात कर रहे हैं, हम और आप भी कर सकते हैं। ये बिजनेस है और ये इक्विटी जनरेट करता है, ये रिटर्न जनरेट करता है। तो इस मॉडल को जो भी समझना चाहते हैं, जितने भी देखना चाहते हैं, मैं स्वागत करूंगा कि हम चर्चा को और भी आगे, क्योंकि एक ही वेबिनार में नहीं हो सकता, हम बात करेंगे इस पे और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये एक मिशन है और मुझे इस बात का गर्व है, और जो टीम, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि हमारे साथ डॉक्टर अरुण जोशी हैं, डॉक्टर RS रेड्डी जैसे कमिटेड, और जिनको मैंने बहुत नजदीक से देखा है, डॉक्टर बाला स्वामी जुड़े हैं, हालांकि परिचय अभी नया है, बट नया परिचय, और जो व्यूज है उससे मुझे लगता है कि हम बहुत लंबी साथ ही मॉडल्स को लेके चलेंगे। मिस्टर रितेश जो बहुत यंग है और शायद इस काम को बहुत आगे पहले ही बढ़ा रहे हैं। तो मैं बस एक ही कहूंगा कि मैं फॉर्चुनेट हूँ, आप लोग अगर साथ हैं और सारे अटेंडीज अगर साथ हैं, तो हिंदुस्तान हमेशा से लाइव स्टॉक में, हिंदुस्तान विश्व गुरु, बाकी में मुझे नहीं पता बनेगा कि नहीं, लाइव स्टॉक में हम हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और इसे हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया में लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी जो भी कह दें हम, बट मैनेजमेंट हमारा अपना ट्रेडिशनल बहुत अच्छा है, हम सर्वाइव किए हैं। और गोट में तो हम ऑर्गेनिक हैं आज भी, किसी भी पैमाने पे। तो मैं इस बात के साथ ये समाप्त करूंगा, जस्ट फॉर्चुनेट कि आप लोग साथ हैं, और ये आइडिया में मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज में हो या पुवर्टी जहाँ भी है, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हमारे एशियन कंट्रीज जो हैं, हर देश में इस मॉडल को हम रिप्लिकेट कर सकते हैं अगर हम साथ आते हैं। और रिप्लिकेशन मतलब हमें आपको नहीं करना, आइडिया को करना है, ये कंसेप्ट जाना चाहिए। तो मैं थैंकफुल हूँ आप सबका, और जिस तरह से आपने ये साथ हम लोग चले हैं, मेरा ये उम्मीद है कि इस कंसेप्ट को लेके हम आगे बढ़ेंगे और एक मॉडल हिंदुस्तान को देंगे। हमें कुछ सॉल्यूशन देना है, और गोट, और ये गोट बैंक, और ये सिर्फ गोट बैंक नहीं है, मैं बंद करने से पहले बोलूं, ये लाइव स्टॉक बैंक है, इसमें डेयरी भी हो सकता है, पोल्ट्री भी हो सकता है, जो भी लाइव स्टॉक आप करें, बिकॉज लाइव स्टॉक बिगेट्स लाइव स्टॉक। और इस प्रिंसिपल पे अगर हम बिजनेस को डिजाइन करें तो फार्मर दुखी नहीं होगा कि सिर्फ उसे पेमेंट करना है। थैंक यू। थैंक यू सर। यस सर, डॉक्टर अरुण सर कुछ वांटेड टू आस्क। माइक म्यूट है सर आपका।
just one small one line, if I am allowed. Sure, sir. Please go ahead, sir. Well, I must say big thank to all goat rearers from ages, the pastoralists of India, जिन्होंने इस दुनिया को, इस देश को एक बहुत बड़ा नाम दिया, जिसने सबसे बड़ी संपत्ति तैयार की है, और उसको कहा जाता है ब्रांडिंग। आज किसी भी चीज की ब्रांडिंग कर दो तो उसका कीमत बढ़ जाती है, और मेरी समझ है कि ये ब्रांडिंग का शब्द जो आया वो उन पास्टोरलिस्ट के तरफ से आया, जब वो अपनी भेड़ों को या अपनी गायों को या अपनी बकरियों को एक दाव लगा देते थे पीछे पहचानने के लिए कि ये किसकी है। तो मुझे लगता है कि हमको उन लोगों को अंडरमाइन करने के बजाय उनके साथ अगर खड़े हो जाएं, तो जिस तरीके से उनके किए हुए काम के एक शब्द ने इस दुनिया में इतनी विशाल संपदा इकट्ठी की है, तो फिर क्यों नहीं वो हम सब मिलके वापस उसी तरफ जा सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, Arun Joshi sir and Sanjeev sir. And for Sanjeev sir's view on the need for passion and positivity to propel a new idea, and not even new because the efforts that has been from the end of the Goat Trust, which has led to initially many failures, but that failure then led us to standardize the model, and how this can be viewed as a sustainable or self-survival mode for any civil society or NGO or social enterprise. They can develop an equity based on the asset. Once they have an asset, when they lease it to the community, their own survival also is being ensured by the services that they provide to the community. So this is sort of a circular model wherein both the implementer and the community are benefited by each other's effort. So this can be a new way ahead for just as Sanjeev sir mentioned, not just goat livestock, but in all other livestock, and a field of an area of intervention that can be taken up by the civil society organization. In the context of COVID era, as we mentioned in the title as well, migrants which are coming back to their villages, they also need a livelihood which is very easier to, which has a very low entry barrier. So in terms of goats, the asset cost is very low. But as mentioned by other speakers as well, that even after asset acquisition, they would require backward and forward linkages for finance, for feed, insurance, and remunerative market. So they need, apart from the existing financial service providers and other institutional providers in the value chain, we need a specific body which would be an interaction between the community and the institutional service provider. So we thank you, Sanjeev sir, and also Arun Ramesh sir, for imploring us to stand with the people who have been doing this livelihood since generations for thousands of years, and they have put in their efforts to provide as a thought to us that this livelihood is actually sustainable across ages, and this is something which is demanding our attention to move it from subsistence to significance. So thank you all. Since we have overshooted, we would not be able to take questions as of now, but I would ask my audiences to, our audiences to rest assured. Solutions to the queries which have been raised, which are unanswered, will be provided in the form of mail or WhatsApp to the respective participants. I thank you all for your participation. Hope the session was stimulating and will promote action towards formalization of livestock trade with backward forward linkages specifically on the financial end. Stay tuned for our series of webinar. Coming up this week is webinar on herbals for livestock management, which is scheduled on Friday, 19th June from 4 p.m. to 5:30 p.m. We hope to see you again. Once again, International Institute of Goat Management conveys its gratitude towards the panelists and the participants
for their contribution in taking forward this idea and hope this would generate actions in times to come. I thank you all for your participation. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir.